Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to see the phonic sound over here. Okay, in this video we are going to cover phonic sound. So how to pronounce a particular letter. Okay, we will see here. Okay, so let's start. So our first letter is S and the sound is S. And the examples are snake, spoon. Okay, the next one is A and the sound is eh. Okay, and the examples are arrow, apple. Okay, because the sound is a, so we have to tell like that: arrow, apple. The next one is T and the sound is cha. And the examples are tiger, tomato. Okay, the next one is I and the sound is E. Examples are ink, ink pot. The next one is P and the sound is f. And examples are puff, parrot. Next one is N and the sound is ना बोलना है, मीन्स ऐसे करके नो से लाइक द एग्जाम्पल्स आर noise, nest. Okay, the next one is C. The sound is k. Car, cat, like this. Okay, next one is K and the sound is k. Examples are kite, king. Okay, next is E and the sound is eh. How do we say egg? Okay, next is H and the sound is ha. मुंह से बाहर हवा निकालते हुए बोलना है. Horse, hen, hall, hum, like this. Okay, next is R and the sound is r. Examples are ring, rose. Next letter is M and the sound is ma ka sound. Moon. Okay, next is D, sound is d. Examples are dog, donkey. Next is G and the sound is girl. Next is O and the sound is O. Example is oats, orange. Next letter is U and the sound is a. U को हम कैसे बोलेंगे? लेटर U है बट इसका साउंड क्या होता है? a. Umbrella. Okay, next letter is L and the sound is l. अपने टंग को टीथ में सटा कर बोलना है l. Okay, and the examples are lion. Okay, the next is F. The sound is f. Fish, friend, fish. Next is B. The letter is B and the sound is B. Examples are ball, bat. Okay, next letter is J and the sound is jug. Okay, next letter is Z and the sound is z. बज वाला जो साउंड होता है बज. zebra, zoo. Okay, next is W and the sound is wa. And examples are white, water, watermelon, wallet. इसमें आपको क्या करना है? अपने माउथ को राउंड घुमाकर तब बोलना है. white, water, watermelon. आप बोले, मेरे साथ बोले, तब आपको समझ में आएगा कि रियली आपका माउथ राउंड घूम रहा है इसमें while pronouncing these words. Okay, next is V and the sound is again W. but difference यहाँ क्या है? यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे हम. van, vacancy, valid. आप एक बार मुंह खोलेंगे बोलने के लिए, फिर आपको बोलते ही जब वर्ड खत्म हो जाएगा आपका माउथ बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, लाइक दिस. वैन,
एन पर, लास्ट लेटर पर बन, वैकेंसी, वैलिड, वाइब्रेट। तो आप बोलेंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट पे स्टॉप हो जाएगा, वैलिड, वाइब्रेट। नेक्स्ट इज वाई, इज साउंड इज य। एग्जाम्पल्स आर yak and yes, yes. Next is x, 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 x. Its sound is x because it is made up of k and s, इसलिए इसमें ख का साउंड आता है, क का और श का, श तलब्बे स का। ओके, the example is Xmas, Xmas. Okay, next is Q. Q is made up of K and U. इसमें इसलिए इसका साउंड आएगा क और अ का। ओके, Q क, K और U से मिलकर बनता है, तो हिंदी में इसका साउंड क और अ से मिलकर बनेगा। ठीक है, ऐसे इसका एग्जाम्पल होगा क्वीन, क्विल्ट। Okay, so I hope this video will be very helpful for you. So thank you, thanks for watching. Bye bye, take care.